Hello students, good morning. In last video, we had solved two examples on the board of place value and face value of 3-digit numbers. Now, here is in your textbook, there is a number 589. That number we have written according to HTO columns. 589, 5 has 100 place, 8 has 10 place and 9 has 1 place. Now, I had told you students on that day the face value of a digit is its actual value. Whatever number is there, that is only its face value. Face value never change, but the place value will change. Okay. So, 9 has 1's place. The place value of 9 is 9 only. And the face value of 9 is 9 only. Now, 8 has 10 place. So, the place value of 8 is 80 and the face value of 8 is 8. 5 has 100 place. So, the place value of 5 is 5 into 100. It means 5 after 200, that is 500. And the face value 5 itself. Okay. Now, the place value of a digit depends upon its place in the number. उस दिन में मैंने आपको बताया था कि उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर होते हैं और उससे उसका प्लेस वैल्यू क्रिएट होता है. Now here is a question. We will solve the exercise 2.6. The first question is encircle the digit in one's place. हमें क्या करना है? गिवन नंबर में से जिस नंबर को one's place है उसे क्या करना है? सर्कल करना है. Encircle the digit in one's place. The first number is 371. So which number has one's place? Yeah, 1. 408, 8. 327, 7. 652, 2. 784, 4. 693, 3. 3 has one's place. So we solve this example. Encircle the digit in one's place. Question number 2 is there. Read the question with me. Encircle the digit in tens place. So on tens place, whatever number is there, that number you have to circle. Here is 448. Always keep in your mind ones, tens and 100. The middle number has 100 place. It means the 4 has tens place. And we have to circle on tens place number. 832, 3 will be there. 293, 2 has tens place. 847, 4 has tens place. 980, 1 has tens place. Same question. Encircle the digit in hundreds place. Given number, in the given number, those number has 100 place, that number you have to circle. Now here is a printing mistake. Here is the opposite 7. So do it properly first. And the whole number is opposite. So let it be. Cut करो इस number को, कोई problem नहीं. 245, 2 has 100 place. 479, 4 has 100 place. 562, 5 has 100 place. 792, 7 has 10 place. Sorry, 100 place. Now 889, 1s, 10s and 100. The first number has 100 place. Okay. Now next question number 4. Consider the place value of the given numbers and then write the number in the box. यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू दिया है और आपको उसको मतलब समझदारी के साथ इन द बॉक्स में क्या लिखना है? नंबर लिखना है. ओके. नाउ फर्स्ट एग्जांपल दे हैव सॉल्व्ड. ए डिजिट इन वंस प्लेस 7. वंस प्लेस पे कौन है? 7. डिजिट इन टेंस प्लेस 2. डिजिट इन हंड्रेड प्लेस 4. That is why 4. Okay. So number is formed 427. Digit in tens place 0. Digit in 100 place 5. Digit in ones place 6. Now here not sequentially the number are there. So first you have to find digit in
100 प्लेस। हमें क्या करना है, सबसे पहले 100 प्लेस के नंबर को एक नंबर पे लिखना है। ओके, नाउ टेंस प्लेस फाइंड करना है। डिजिट इन टेंस प्लेस दैट इज 0 and digit in ones place that is 6. So the number is 506. Got it? Here on page number 25. Digit in 100 place 3. 100 place. Digit in tens place 5. And digit in ones place 3. So the number is 353. Digit in tens place 2, digit in 100 place 6, digit in 10 place 2 and digit in ones place 0. Okay, now next digit in tens place 0. अगर आपको गिवन इंफॉर्मेशन से ही लिखना है, सो डिजिट इन टेंस प्लेस 0 मतलब इन द मिडल. ओके, digit in 100 place. So where the 7 will come, here or here? Yes, in the starting, in the beginning. That is 7. Digit in ones place. That is 1. So like this also you can write. Okay, no problem. If you will write like this method or this, the answer will be same. No problem. Digit in 100 place 1. Digit in ones place 1. Ones place and digit in tens place that is 0. That is why the number is 101. Got it? Now the next question. Write the place and place value of encircled digits. आपको क्या दिया है, नंबर दिया है 3 डिजिट नंबर एंड इन 3 डिजिट नंबर में कुछ नंबर को सर्कल है, इन सर्कल दिया है. Here is a place. उनकी जगह क्या है, वो कौन से जगह पे है, that is the place. It means on ones or on tens or on hundreds. And here we have to write their place value according to its place. उसकी जगह के हिसाब से हमें क्या लिखना है, उसका face value लिखना है. Now here 283 place of 3 in circle number place that is ones. So place value will come 3 ones is equal to 3. Okay. Second 978 7 on, देखो यहाँ पे ones है, tens and 100. So इधर हम क्या लिखेंगे, अभी बताइए मुझे. hundreds लिखेंगे. क्या लिखेंगे, सॉरी tens लिखेंगे, not hundreds. tens, TENS, tens लिखेंगे, है ना. 7 नंबर कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे. इधर आएगा 7 टेंस. व्हाट इज द आंसर विल कम, 7 टेंस मीन्स 70, है ना. 856 वंस टेंस 100, 800 प्लेस पे है तो यहाँ पे आएगा प्लेस हंड्रेड्स. HUNDREDS हंड्रेड्स. इधर आएगा 8 hundreds means what number will come, 8 hundreds means 800 100, है ना. 263 6 has tens place, TENS. 6 tens means 60. 908 0 has tens place. It means 0 tens will come, 0 will come, no problem. Tens will come, that is what will come, 0 will come. 0 tens 0 only. Now here 682 6 has hundreds place, 100. HUNDREDS hundreds. तो यहाँ पे लिखना है 6 hundreds is equal to 600 600. That is 600 is place value of 600s. Okay. 338 ones tens 100. 3 has tens place.
TENS 3 tens इज इक्वल टू 3 tens मतलब क्या है 30 है ना 696 9 has tens place that is why 9 tens 90 90 780 0 has ones place 0 has ones place 0 ones what will come 0 only huh? 214 1 has tens place 110 is equal to 10 है ना got it now here sixth question is fill in the blanks we have to write the place value and the face value fill in the blanks in 194 the place value of 9 is dash the face value of 9 is dash किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है हमसे 9 194 the 9 has tens plus means 9 after 9 tens means 90 the place value of 9 is 90 and the face value means the number itself the actual number that means 9 है ना in 357 the place value of 3 what is the place value that is 300s means 300 300 is the place value of 3 okay the face value 3 will come got it the face value and place value of digit in number is the same at place उन्होंने पूछा है किसी भी नंबर की द फेस वैल्यू एंड प्लेस ऑफ डिजिट इज द सेम एट वंस प्लेस ऐसा नंबर है कि जहां पे उस नंबर की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू एक ही होती है सो वो कौन सी प्लेस है तो वो वंस है वंस में नंबर की प्लेस वैल्यू चेंज होती है क्या नो द नंबर इटसेल्फ ओनली एंड in face value also the place won't change it means the face value and place value of a digit in number is the same at ones place कहाँ पे सेम होती है ones place पे सेम ही होती है okay understood students how we solve this example okay now here is 2 questions then the next part we will learn later Find the sum of the place value and face value of 7 in the 279 is. यहाँ पे क्या है sum means क्या करना addition करना किसकी the place value find the sum of the place value and face value of 7 279 में 7 की place value क्या है 7 10 से that is by 70 and the face value of 7 that is also 7 आपको क्या करने के लिए बोला है उनका एडिशन करने के लिए बोला है and addition will come 0 plus 7 will come and here is only 7 will come it means 70 plus 7 is equal to 77 how was the question find the sum of the place value and face value of the 7 in 179 the place value is 70 and the face value मतलब जो नंबर है वो खुद है so 70 plus 7 is equal to 77 okay यहाँ पे हमें sum बोला था addition बोला था now the difference between the place value and face value of 6 difference means what minus किसके बारे में पूछा है between the place value and face value of 6 यहाँ पे देखो ये जो नंबर है वहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 हैज वंस प्लेस दैट इज वाई प्लेस वैल्यू विल बी 6 एंड फेस वैल्यू दैट इज ऑल्सो 6 आपको डिफरेंस मतलब क्या करना है माइनस करना है ना डिफरेंस मीन्स व्हाट माइनस
So 6 minus 6, 0 will come. But the question, how they ask the question, that is why read the question. The difference between the place value and face value of 6 in 156. That is what will come? 0 will come. Okay? Understood? Again we will read this question. The difference between the place value and face value of 6 in 156. 6 की place value क्या है? 6 है और face value भी 6 है. जब उनका माइनस किया, डिफरेंस किया, तो वो कितना मिला हमको? 0 मिला. So remember, it means हमें क्या ध्यान में रखना है? The place value of digit 0 is always 0 irrespective of its place in the number. हमें ये याद रखना है कि किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू अगर इट मीन्स डिजिट में अगर 0 हो तो उसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 0 ही होती है. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी 2-3 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए है ना प्रैक्टिस सेट में. सो वी हैव सॉल्व सम एग्जाम्पल. सो कीप इन योर माइंड सम थिंग्स एंड इन नेक्स्ट period I will teach you expanded form of 3-digit number. So next video I will make on expanded form. Till bye and take care.